Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCipher Labs LLP at support@coinswitch.co. Hi, hello everyone. Hello everyone. A very warm welcome to this special episode of Weekly Crypto Live from CoinSwitch. This is me, Shubham Hooda, and we have Parth Chaturvedi with us, directly joining us from Bombay. How are you, Parth? I'm good, Shubham. How's the weather in Bangalore? Is it cold? Apparently, North India is shivering right now. Yeah. I think yes, North India is I think deeply chilled, but Bangalore में weather हमेशा अच्छा रहता है. We are a all-weather city, so nothing All is changing here. I mean, whether it's winter or summer. nice. Bombay is also similar, and I would say crypto markets are not the same though. They keep changing every week. I think last week was very different. Like everything is in the green. If you see on a weekly chart, like most of the top 100 tokens are back in the green. Definitely. Definitely, Parth. I think the market is in the green. Altcoins have been rallying left, right, and center, and I think the biggest play is Solana play, which is happening. I mean, people have been trading Solana coins, और काफी interesting airdrops लोगों को मिले हैं. So let's start with that. I think Yeah, sure. So yeah, I think without a doubt Solana ecosystem में बहुत ज़्यादा energy आ गई वापस. तो अगर आप yes, if you go and see the price increase, you will see कि ETH has not been able to keep up with even Bitcoin. Bitcoin का जो price increase हो रहा है, ETH is not able to match that. Hmm. Versus Solana is giving magnified returns whenever Phenomenal. Bitcoin is moving. So Definitely, मतलब it's back around that $100 mark, and yeah, it's interesting to remember कि beginning of the year this was as low as under $20 था, तो ये 5x हो चुका है already. yeah, So like last year के start के time पे. So again, Solana ecosystem, lot of positives. I think primarily what was the main concern for Solana was कि वो down होता था, network downtime बहुत होता था. That Hmm. problem has been solved for. Now people are Hmm. looking at it as a direct competitor to Ethereum. And Hmm. आपने जो airdrops की बात करी है, that is also very important because that brings about wealth in within the ecosystem. So Hmm. airdrop होता क्या है? Like I would just want to touch on that for a Definitely. bit. कि Hmm. बहुत सारे जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपने इनिशियल यूजर्स को एक टोकन रिवॉर्ड की तरह देते हैं. तो लेट्स से जो लास्ट वीक हुआ जुपिटर एक डेक्स है Hmm. ऑन क्या कहते हैं सोलाना. तो उस डेक्स पे अगर आप पहले से यूज कर रहे होंगे उस डेक्स को, तो उनके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, उनके मेट्रिसेस बेटर हो जाते हैं. सो दे ट्राई टू रिवॉर्ड दोज इनिशियल यूजर्स बाय एन एयर ड्रॉप. एंड Hmm. एयर ड्रॉप से जुपिटर का एयर ड्रॉप वाज लाइक 700 मिलियन प्लस. तो Yeah. ऐसी न्यूज आ रही है कि कुछ एक दो टीनेज लोग जो हैं वो रातों रात मिलियनर बन गए बिकॉज ऑफ द एयर ड्रॉप. तो उससे एक बहुत Yes. ही ज्यादा वेल्थ इफेक्ट क्रिएट होता है. एंड Hmm. अगेन दैट वेल्थ इफेक्ट विल गेट फर्दर इन्वेस्टेड इन द सोलाना इकोसिस्टम. इसलिए Hmm. सोलाना का टोकन का प्राइस भी अगर आप देखें, सोल का प्राइस इज ओवर आई थिंक 12-15% बढ़ा है लास्ट वीक फिर से. एंड इट हैज Yeah. बीन कंस्टेंटली राइजिंग. ये पहला एयर ड्रॉप नहीं है जुपिटर, इससे पहले जीटो हुआ था, उससे पहले पिथ Hmm. का एयर ड्रॉप हुआ था. तो सोलाना इकोसिस्टम में बहुत सारे एयर ड्रॉप्स हो रहे हैं. एंड वी आर सीइंग वेरी गुड एक्टिविटी ऑन Definitely. दैट पर्टिकुलर चेन. In fact, Parth, एक interesting anecdote देना चाहूँगा मैं. So yesterday I met a very wonderful guy who has been in the ecosystem for a long time. I won't name him, but he has kind of मुझे उसने लूर कर दिया सोलाना इकोसिस्टम को और एक्सप्लोर करने में, यूज़ करने में, क्योंकि मैं इथेरियम और ईवीएम कंपैटिबल चेन से ज़्यादा यूज़ करता था. सो आई एम आल्सो स्टार्टिंग टू यूज़ सोलाना इकोसिस्टम फ्रॉम टुडे आफ्टर द एयर ड्रॉप व्हिच हैज हैपेंड. सो I think one more thing, again to all the users, अगर आप unless you are a developer who's really actively working on one particular chain और आपकी इसलिए chain loyalty बहुत ज़्यादा है, please bear in mind कि future is going to be multi chain. ऐसा नहीं होगा कि केवल कोई एक chain survive करेगी. Multiple chains will be there. They will be talking to each other. उनकी या interoperability बढ़ेगी, उनकी connectivity बढ़ेगी. But having said that, I think you should keep an open mind. या Even new chips are coming. अभी this is तो मैंटा नेटवर्क का लॉन्च हुआ है, फिर लेयर टूज और आ रहे हैं, लेयर वंस और आएंगे. एंड जस्ट बी ओपन टू दिस काइंड ऑफ चेंज दैट इज हैपनिंग.
डेफिनेटली पार्थ। और आई मीन सोलाना तो इथेरियम किलर था, बट सोलाना किलर्स भी थोड़े थोड़े मार्केट में पॉप कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं सी और सुई कैन बी इवन बिगर देन सोलाना। सो वेरी इंटरेस्टिंग 2024 इज इन फ्रंट ऑफ अस। यस यस एंड आई मीन हैविंग सेड दैट आई थिंक हम लोग सबसे बड़ी न्यूज़ को फिर से भूलना नहीं चाहिए। ईटीएफ जो है, आई नो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने बोला कि ईटीएफ तो बेकार रहा, इसके बाद कुछ नहीं हुआ, प्राइस 60,000 नहीं गया, सेल द न्यूज़ इवेंट था। आई या आई वांट टू लाइक क्लैरिफाई कि अगेन पीपल आर नॉट लुकिंग एट द फुल पिक्चर। कल कल 31 जैन के आई थिंक फाइनल जो नंबर्स आए हैं, या उसमें एक और दिन ऑफ इनफ्लोज आया है। तो बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, जब ईटीएफ लॉन्च हुए तो ग्रे स्केल का बिटकॉइन ट्रस्ट वाज कन्वर्टेड इनटू एन ईटीएफ जीबीटीसी, यस एंड यस जीबीटीसी का मैनेजमेंट फी स्ट्रक्चर इज वेरी बैड, लाइक इट वाज चार्जिंग 1.5% ऑन एयूएम, व्हाट वाओ वर्सेस लाइक जो अभी जो ईटीएफ लॉन्च हुए हैं वो 0.25% है। कुछ तो इनफैक्ट फ्री में भी दे रहे हैं, लाइक कि पहले आप यस 6 मंथ्स यू विल हैव नो फीस। सो बहुत सारे लोग वो जीबीटीसी से अपना बिटकॉइन सेल करके नए ईटीएफ्स में डिप्लॉय करेंगे। मैं करेंगे बोल रहा हूँ क्योंकि वो एग्जैक्ट एकदम लाइक ऐसे इंस्टेंटेनियसली नहीं हो सकता कि आप जीबीटीसी निकाल के लाइक तुरंत वो कर दीजिए। सो उसकी वजह से वी हैव सीन मैसिव आउटफ्लोज फ्रॉम जीबीटीसी, लाइक 5 बिलियन से ऊपर ज्यादा बिटकॉइन सेल किया गया है। एंड द फैक्ट दैट बिटकॉइन हैज कंटिन्यूड टू मेंटेन दैट 40,000 पे एकदम आके रुक गया था, उसके बाद अब वापस लाइक 43,000 की तरफ बाउंस कर रहा है। सो इट इज अ ग्रेट साइन कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिमांड। जो सबसे दो बड़े ईटीएफ्स हैं, ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी, they have over 2 billion in bitcoin now. So just think of like these numbers are not small. ये उनकी बुक्स पे हैं अब कि ब्लैक रॉक की बुक पे अब लाइक 2 बिलियन से ज्यादा का बिटकॉइन है। ओवरऑल इनफ्लोज अगर आप ईयर टू मतलब जीबीटीसी का वो सारा का सारा आउटफ्लो को नेगेटिव करके देखें तो भी लाइक ओवर 1.5 बिलियन आई थिंक न्यू इनफ्लो आया है इन बिटकॉइन। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ईटीएफ्स में एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि यू कांट मार्केट न्यू ईटीएफ्स टू ऑल योर कस्टमर्स ऑन डे वन। कुछ एक टाइम फ्रेम होता है, 1 महीना जब वो चल जाए, 1 महीना तक ट्रेड हो जाए या 3 महीने तक ट्रेड हो जाए, उसके बाद आप अपने सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको ये पिच करेंगे। सो ब्लैक रॉक और फिडेलिटी की सेल्स टीम्स अभी शुरू भी नहीं किया उन्होंने इसको ढंग से पिच करना। सो वी कैन ओनली इमेजिन कि किस टाइप की इंस्टीट्यूशनल डिमांड आएगी। डेफिनेटली। मतलब मोटा मोटा पार्ट में अगर इसको समराइज करूं तो इनफ्लोज अभी भी ज्यादा है आउटफ्लोज से। पीपल आर स्टिल बाइंग, ईटीएफ से बाइंग प्रेशर आ रहा है। कितना भी आप जीबीटीसी को अलग से देख लें, ओवरऑल देयर इज बाइंग हैपनिंग इन द मार्केट। एंड एंड आई यस एम जस्ट डूइंग सम लाइक आई एम डूइंग अ ब्रीफ कैलकुलेशन। जैसे 31st को 200 मिलियन का इनफ्लो आया है, 40,000 के प्राइस पे, दैट इज अराउंड 5,000 न्यू बिटकॉइन का डिमांड है फ्रॉम द ईटीएफ्स। हर दिन कितना बिटकॉइन जनरेट हो रहा है? 900, दैट्स इट। नया बिटकॉइन आ रहा है मार्केट में 900, 5,000 इन लोगों को खरीदने हैं। कहाँ से खरीदेंगे? आपके मेरे बिटकॉइन खरीदने के लिए प्राइस ये लोग फिर, मैं तो नहीं दे रहा अपना बिटकॉइन 43 पे, तो हो सकता है इसीलिए लाइक वी विल कीप ऑन सीइंग लाइक प्राइस इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट डिमांड प्रेशर। अमेजिंग अमेजिंग। इनफैक्ट टेक्निकल्स की भी अगर बात करें पार्थ, तो बिटकॉइन ने जो जंप लिया है दैट इज फ्रॉम अ वेरी बिग सपोर्ट लेवल। जो 38.5 के यूएसडी का सपोर्ट था, दैट इज दैट शोज कि जो बुल्स हैं मार्केट में, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट प्राइस, एंड वहां से काफी अच्छे पंप्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड एज एन इन्वेस्टर, इट इज नॉट द राइट टाइम टू प्रोबेबली सेल योर बिटकॉइन, is what we can say. I mean, not financial So advice, but doesn't look like it's the right place. right. Can you hear me? Hello? Yeah, I was going to say कि it is never the right time to sell Bitcoin. yeah, Model for definitely, life, definitely. but not financial advice. Again, just want to Yeah. clarify. Uh, I'm sensing some lag. Can you hear me, Shubham? Yes, Parth. Your audio is well reaching us. Okay. Some other tokens that I wanted to highlight. एक दो जो बड़े tokens थे, Link, Chainlink जो है. Hmm. Yeah, I think Hello. let's talk about Oracle protocols. Yes, Pith भी जो है. Hmm.
So, meanwhile, Parth joins back, I think, currently talking about Chainlink. And Chainlink token last 24 hours में करीब 17 से 18% बढ़ चुका है अभी तक. And it looks like in the last 7 days it's up almost 30%. So Chainlink के बारे में बता दें. Chainlink एक Oracle सर्विस प्रोवाइडर है. Oracle सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं? वो ब्लॉकचेन्स को, जैसे इथीरियम ब्लॉकचेन है, तो इन ब्लॉकचेन को रियल वर्ल्ड डेटा नहीं मिलता है, और रियल वर्ल्ड डेटा अगर आ सकता है तो वो यूजुअली सेंट्रलाइज सोर्सेज से आता है. दैट मीन्स दैट ब्लॉकचेन कैन हैव अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. सो चेनलिंक क्या सॉल्व कर रहा है? चेनलिंक इज सेइंग कि अगर आपको लेट्स से ये पता करना है कि आज जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है उसका स्कोर क्या है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको ब्लॉकचेन में देनी है तो चेनलिंक हेल्प्स यू गेट दिस इन्फॉर्मेशन इन अ डिसेंट्रलाइज फैशन. लोग चेनलिंक को चेक करते हैं एंड फिर वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं. अगर वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स होती है तो उनके चेनलिंक टोकन्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं. इट्स अ great business model which Chainlink has come up with, but oracles in itself is a big problem which people have been trying to solve in blockchain ecosystem for a long time. And अभी एक नया प्रोजेक्ट जो आज फिर से पंप हुआ है, पिथ PYTH, जिसकी बात कर रहे थे पार्थ. पिथ सोलाना का एक टोकन है. एंड अगेन, बिकॉज सोलाना हैज बीन राइजिंग इन वैल्यू लाइक दिस, बिकॉज ऑफ द चेन लिंक्स पंप एंड बिकॉज ऑफ द जुपिटर एयरड्रॉप, पिथ में भी हमने राइज देखा है. हे पार्थ. Sorry guys, sorry, but I don't know why my laptop just switched off, so I dialed from my phone. हाँ, तो लिंक की आपने बात करी और पिथ, लाइक बेसिकली ये दोनों ओरेकल नेटवर्क्स हैं, एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन सीइंग मेजॉरिटी व्हेल एक्यूमुलेशन हो रहा है. लिंक का प्राइस तो इनफैक्ट आई थिंक 25% से ऊपर बढ़ा लास्ट वीक. So it just goes to show that there is a lot of investor interest, and bigger investors, whales होते हैं जो like बड़े investors होते हैं, they are continuing to accumulate these two tokens. Right. और एक और इकोसिस्टम जिसकी मैं बात करना चाह रहा था वो था पॉलीगॉन का. आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में भी कि थोड़े बहुत मैसिव लेऑफ्स हुए हैं इन पॉलीगॉन लैब्स. उससे टोकन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है. द टीम, आई थिंक संदीप का भी यही मैसेज था that they want to operate as a more lean organization and restructure the different arms. So token has been doing pretty well. Aggregator, they want to become the aggregation layer for all kinds of layer 2s. So that narrative is still pretty strong. And हमने उसके first कुछ use cases देखना आना भी शुरू कर दिए. तो Immutable X, which is like a gaming focused blockchain, उन्होंने Polygon ZK EVM पे अपना mainnet launch किया. This again happened last week, and we have seen a massive increase in IMX token price also. Like I think 20% से ऊपर भागा था. Yeah, in fact, recently मैंने भी देखा है. Obviously Polygon पे bad news थी कुछ लोगों के लिए when the layoffs happened. But अगर आप देखेंगे उन्होंने अपनी थोड़ी marketing strategy भी change करी है. Yesterday only I was watching their Twitter and they have launched a Twitter video series जहाँ पे every week they will just mention what is going around in the Polygon ecosystem, and that video very easily explained कि aggregated layer से उनका क्या मतलब है. I think Parth, आप और मैं जानते हैं कि Polygon has been leading several innovations in the layer 2 system from day one. Right, Polygon Matic network one of the first layer 2s था जो कि Ethereum के top पे बना, and now with their ZK EVM also gaining traction, it is very likely कि जब वो aggregated layer launch करेंगे after their modular network has already come out, this can give a big boost to the Matic network usage. For sure. Yeah, for sure. I think अभी और इनफैक्ट उनका प्लान भी है टू ट्रांजिशन टू पोल करके नया टोकन बनाएंगे. वो मैटिक से ट्रांजिशन करेंगे. एंड मैटिक में अभी जैसे केवल मैटिक का जो पीओएस है उसमें जो स्टेकर रेवेन्यू होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. पोल में जो सारे के सारे डिफरेंट लेयर 2s बनेंगे उन सब की वैल्यू जो है अक्यूरी होके पोल टोकन पे आएगी. तो लेट्स सी हाउ दैट पैन्स आउट. इट इज लाइक अ बिग पिवट अवे फ्रॉम द करंट मॉडल. तो इसके बारे में people should be aware about it. And again, as Indians, being an Indian project, I think we should be very interested in how Polygon succeeds. Yeah. In fact, मतलब जिन लोगों को नहीं पता है तो Polygon in India has been one of the topmost protocols जो कि grants बांट रहा है Web3 builders को. I think Polygon, Solana, these are the top chains जिन्होंने बहुत grants बांटे हैं पास में. इनफैक्ट आज भी अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं सारे प्रोग्राम्स को. So if Polygon is a success, that basically means को जो उन्होंने grants में Polygon tokens बांटे हैं अपने नए entrepreneurs को इंडिया बेस और वर्ल्ड वाइड, those projects will also
gain from this True that. positive upside, and make great companies from India. Hopefully, yeah. Yeah. So moving on, Parth, I think कुछ AI tokens की अब बात कर लेते हैं, because हमने देखा है कि कैसे विटालिक ब्यूटरिन, जो कि क्रिप्टो के सबसे बड़े ओजी माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज थीसिस, हिज रिसर्च पेपर्स, ऑफ व्हाट ही टॉक्स अबाउट, ही इज अ विजनरी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड उन्होंने अभी अभी रिसेंटली पेपर लिखा अपने ब्लॉग में, बेसिकली पेपर नहीं बोलेंगे, उन्होंने ब्लॉग लिखा जहाँ पे ही टॉक्ड अबाउट व्हाट कैन हैपन विद द इंटरसेक्शन ऑफ एआई एंड क्रिप्टो. एंड जब से वो ब्लॉग बाहर आया है, पर एआई टोकन्स के अंदर एक छोटी सी रैली जो है वो देखने को मिली है, बी इट रेंडर टोकन RNDR, बी इट न्यू टोकन लाइक बिट टेंसर्स टाओ. People have been again shifting their attention back to AI tokens. So do you think this has a long term momentum which has just started, और या फिर ये सिर्फ एक छोटी सी speculation rally जो है वो चल रही है अभी? I think it is a long-term trend and it will probably be the most hype trend of this particular bull market. क्योंकि AI में जो hype है वो आप सब लोग जानते ही हैं, like chat GPT movement के बाद से AI has become like very mainstream in a lot of these discussions. And in the future now, again, if Vitalik is saying it, I think everybody will start paying more attention. Yeah. विटालिक ने 2 ब्लॉग लिखे इस बार, इस लास्ट वीक में. एक तो लिखा था अबाउट एआई एंड क्रिप्टो, और दूसरा लिखा कि हाउ ही टर्न 30 years old. So he's just Yeah. 30 and he has such great he's a visionary in that sense कि वो उसको क्रिप्टो की बहुत deep knowledge है, as well as how he sees the space evolving. And इसी की वजह से bit tensor tao जो है, it's a fairly new project. It has 10x I think from in the last 6 months. रेंडर टोकन जो है उसका प्राइस बहुत फास्ट बढ़ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे. और फेच है, fetch.ai, which is again like a AI focused crypto token. All of these have been seeing very strong price action. And अब फ्यूचर में खुद ही I think people don't understand कि अगर machines को कोई करेंसी में एक्सचेंज करना होगा, या मशीन्स को आपस में मॉडल्स में बात करना होगा, it would make immediate sense for them to use some kind of a crypto token for that. Fiat rails or traditional payment rails जो हैं, they cannot function at the speed or at the the requirements that digital models would require. So I think एक बहुत ही natural fit और एक बहुत ही organic fit होने वाला है. So let's see. Again, very early days. All of this is purely predictions about the future, but there are very strong tailwinds, and people like Vitalik are saying that they see a huge intersection between AI and crypto. Yeah, definitely. And I think Parth, if you look at crypto from its core fundamental nature, crypto allows everyone to kind of be their own angel investors, right? I mean, you can, if you are good at researching, if you are someone like, if you are following someone like Hitesh Malviya, for example, you know that alpha is out there. If you research well, if you can understand blockchain protocols, then आप काफी early stage में, या फिर अगर अर्ली नहीं तो एटलीस्ट एक डिफाइंड स्टेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो प्लस एआई प्रोजेक्ट्स में, एंड दे कैन गिव यू अ मैसिव रिटर्न इफ दे एक्चुअली सॉल्व सम फंडामेंटल प्रॉब्लम. एज यू सेड, मशीन्स आपस में बात नहीं कर सकती हैं. मशीन आपस में अगर बात करेंगी, कुछ वैल्यू ट्रांसफर करेंगी, तो सिर्फ क्रिप्टो हो सकता है. बैंकिंग रेल्स इतनी ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं है आज की डेट में कि दो मशीन्स आपस में एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर पाए विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. So again, all of this is let's hope that this is how it pans out. But this is how people are seeing it. इससे हम लोगों को ऐसा दिख रहा है. And आपने जो बोला जैसे कि there's a lot of crypto alpha on Twitter, or sorry, on X. Otherwise, you can also join Discord communities. कोई भी नया प्रोजेक्ट आपको दिखे जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, उसकी कम्युनिटी का पार्ट बनिए. Web3 का आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि एवरीथिंग इज सो ट्रांसपेरेंट इन दोस कम्युनिटीज. यू विल गेट टू लर्न अ लॉट. Yeah, definitely. In fact, अगर आप CoinSwitch क्रिप्टो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है तो आई वुड रिकमेंड प्लीज चेक आउट आवर टेलीग्राम. वहाँ पे भी हम काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं. प्लीज जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी एज वेल. विल ड्रॉप द लिंक in the comments. Cool. Thank you. I think Shubham, that's about it for today's edition.
Yes. नेक्स्ट वीक में हमें ETF पे और वो डिटेल मिल जाएगी कि और कैसे इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं एंड होपफुली आई सी यू इन बैंगलोर नेक्स्ट वीक. Yeah, that would be great. Parth, office say we will do this next week's weekly crypto live. That would be amazing with some numbers in. Awesome. Thank you guys. Thank you for your time. Thank you so much, Parth. Thank you everyone for joining in. See you next week. Bye bye. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCipher Labs LLP at support@coinswitch.co.